Welcome to part 3 of our Yamaha RX135 restoration and porting. इस एपिसोड में हम डिसमेंटल करेंगे हमारा Yamaha RX135. तो ज़्यादा स्पेंड नहीं करेंगे क्योंकि खाली बाइक खोलना है, तो अपन एकदम फटाफट सब खोल डालते हैं. हाउ वी गोना डू इट? वी गोना स्टार्ट विद द सीट निकालेंगे, टैंक निकालेंगे, फिर इंजन का एक्सेस ईजी हो जाएगा, फिर हम इंजन निकालें. तो वी गोना ओपन दी इंजन अप. थोड़ा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वही हम कवर करेंगे. वी गोना ओपन द क्रैंक केस. क्रैंक अपन रीवर्क कराएंगे, बोर भी अपन नया बोरिंग कराएंगे बिकॉज वी आर फिटिंग अ बिगर पिस्टन. वो सब कराएंगे. असेंबली में वी विल पुट इन मोर टाइम, तो आप पूरा इंजन असेंबली देख सको. सो दैट्स व्हाट वी गोना डू इन दिस पार्ट. सो लेट्स गेट आवर हैंड्स डर्टी. चलो. तो ये है मैग्नेट साइड, ये है क्लच साइड. सो वी हैव रिमूव दी क्लच, गियर, ये सब हमने निकाल दिया. राइट नाउ दिस इज द ड्राइव गियर. सो यू हैव टू मेक श्योर यू रिमूव द ड्राइव गियर. ये वॉशर है और ये इधर इसकी की है. सो मेक श्योर यू कीप दीज थिंग्स सेफ. फिर नाउ वी विल रिमूव द शिफ्टर. ये आप शिफ्टर की मैकेनिज्म देख रहे हो. ये सो द शिफ्टर विल कम आउट. ये वो बाजू से शिफ्टर विल वी हैव टू पुश इट आउट स्लोली. शिफ्टर विल कम आउट. एक मेन चीज़ ये है कि यू हैव टू हैव द राइट टूल्स फॉर दिस इंजन. सो दिस इज फॉर द क्लच. तो ये क्लच का टूल है. यू हैव टू यूज दिस टू ओपन द क्लच. दिस इज फॉर द मैग्नेट. तो ये ऐसे मैग्नेट पे लगेगा. देन यू हैव टू ओपन द नट. और फिर हमारे पास इसका पुलर भी है, तो मैग्नेट पुलर भी है विच यू विल नीड. सो मेक श्योर आप खाली हैमर यूज ना करो. राइट, यूज द लीस्ट अमाउंट ऑफ हैमर that you need, so everything comes off nicely. Plus you will need this impact screwdriver, क्योंकि ये पूरा engine assemble हुआ है with the help of screws. मतलब देखोगे आप सब जगह आपको screw ही दिखेगा. So there are screws here, there is one screw here. ये बाजू भी आपको खाली screw ही दिखेगा. Screw. So make sure you have this, क्योंकि इसके बिना to open this engine will be a nightmare. So we're gonna put the camera on time lapse and we're gonna dismantle the engine.
अभी हम असेंबल करेंगे हमारा Yamaha RX135 का इंजन. सो दी केस इज़ रेडी. किशन ने सब कुछ साफ करके प्रिपेयर कर दिया. सो इट्स नीट एंड टाइडी. वी गोना चेंज द बेयरिंग्स एंड देन वी विल रिप्लेस द बेयरिंग. नया बेयरिंग अपन डालेंगे, फिर अपने असेंबल करना शुरू करेंगे. ऑब्वियसली टाइम लैप्स वीडियो होएगा बिकॉज इट्स अ लेंथी प्रोसेस. सो वी हैव अवर केस ओवर हियर. फिर ये है मैग्नेट की साइड. देन दिस इज़ द क्लच साइड. दिस इज़ अवर 5-speed gear box. ये अपना we converting from 4-speed to 5-speed. Here you can see these are the covers. Clutch और magnet का cover है. This is our ported block, right, which is machined and ready to go. This is the new piston which is ready to go. और ये हमारा हाई कंप्रेशन हेड है. तो हेड में हमने ज़्यादा अपने बात नहीं की है, बट वी हैव मशीन दिस हेड. सो दिस कंप्रेशन रेशियो नाउ, अर्लियर इट वाज अराउंड 8 to 9:1. राइट नाउ इट इज़ अराउंड 11:1. सो वी गोना असेंबल द इंजन टुडे एंड yes, you'll get to see the process, but everything in fast motion. How can I forget the crank? ये है अपना crank which is all new bearing, new rod. So okay, let's assemble this engine now. So finally हमारी Yamaha RX135 is ready. Check this out. Now I am really sorry कि हम सब कुछ कवर नहीं कर पाए क्योंकि फ़ोन की और कैमरा की बैटरी ख़त्म हो जा रही थी. So we haven't covered all the parts of engine assembly, chassis assembly. मगर I want you to visit our Instagram channel. Instagram में हमने काफ़ी सारी रील डाली हुई है. उधर एक टाइमलाइन भी बनाई हुई है वेयर जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है वो सब हमने कवर किए हुए. प्लस you will see reels जिसमें I have covered all the important parts. Moreover RX100 RX135 का इंजन असेंबली और रिस्टोरेशन के ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस है यूट्यूब पे. यू कैन चेक आउट राजस गडकरी और समथिंग. आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. तो वो आपको बारीकी से ही कवर्स ऑल द पॉइंट्स ऑफ हाउ टू रिस्टोर द इंजन एवरीथिंग. सो देयर इज़ नो पॉइंट वी डूइंग द सेम थिंग. But if you want to know about porting and modifying, then you are obviously at the right place. That being said, there is one more YouTuber, Bratty Biker. He's also our subscriber. So you can check out his channel. उसने RX King का engine RX G में लगाया हुआ है. So he's a good guy. उसको आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो. ही इज़ वेरी नॉलेजेबल. ही विल टेल यू एवरीथिंग. दैट बीइंग सेड, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट आवर बाइक. व्हाट वी हैव डन. ऑब्वियसली एकदम ऐसा लग रहा है कि शोरूम से हमारी बाइक आई हुई है. द टैंक इज़ न्यू, द होल वायरिंग इज़ न्यू, रियर फॉर्क्स दे आर न्यू. सो दिस बाइक इज़ ऑलमोस्ट डन. क्या बाकी है ये मैं आपको बाद में बताऊँगा, बट लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट इट. द लाइट्स,
everything is new. Right now the seat is new, the instrument cluster is new, headlight new, everything is new except for the front end. We are waiting for the Gladiator front end. तो Gladiator का disc brake का जो set है वो हम fit करने वाले. We gonna fit the Gladiator forks and disc brake. You can see the frame. The whole frame is powder coated, so it looks almost brand new, right? The engine, we have powder coated the covers, we have powder coated the block और ये जो head है. Now what all we have done in the engine, let me tell you that. So first, engine case के अंदर it has a 5-speed gearbox now. So it's no longer a 4-speed, now it's a 5-speed. Now here in the bore we have ported the bore. ये आपने वीडियो में ऑलरेडी देखा हुआ है कि हमने क्या क्या किया है, right? The head is now a high compression head. So the compression ratio earlier used to be around say 8 or 9:1. Now it is 11:1. The main performance upgrade you see over here is our V-Force 4 reed valve. This is ओरिजिनल, ये कोई डुप्लीकेट कॉपी वगैरह नहीं है, ये ओरिजिनल रीड वाल्व है फ्रॉम V-Force. इट्स ऑल कार्बन फाइबर. दिस इज़ अ बिगर कार्ब. ये फैक्ट्री कार्ब नहीं है, इट इज़ बिगर देन द फैक्ट्री कार्ब, बट इट इज़ नॉट एज बिग एज वी वांट. तो ये कार्बोरेटर हम चेंज करेंगे. दिस इज़ अ 26 mm कार्ब. वी आर वेटिंग फॉर अ 24 we are waiting for a 34 mm car, so it's going to be a lot bigger, which is going to help with the power. Moreover, we also going to upgrade the magnet side. तो हम जो magnet rotor वो पूरा ignition system हम upgrade करेंगे, so we can tune the bike according to our need. It already has the expansion chamber, जैसे आपने देखा. The expansion chamber is there. If you notice, there is no muffler over here. So right now the bike is really loud. It's very loud. So before leaving, I'm just gonna start the bike and हम सुनेंगे कि बाइक का आवाज़ कैसे आ रहा है without the muffler. So probably it will be the last time you listen to the bike without the muffler. We are building a muffler right now. So because it's really loud. मतलब पहले सोचा था कि muffler के बिना चलाएंगे, मगर it is not possible. It is so loud that probably we'll have police behind us, and we'll have everyone behind us. It is like really, it's like a rascal. It makes a lot of noise. That's it for this video. Next video probably we'll just do a ride. मतलब next video में खाली I'll take you for a ride on the bike. So I'll put the camera somewhere on the bike or on myself and I'll take you for the ride. और आप notice करना that when the power hits, because we have designed the ports to hit about 10,000 RPM. So 10,000, 11,000 power really comes. तो आपको वो पता चलेगा that when the power really comes, the RPM like it just wants to go crazy, मतलब warp speed. So you will see that, but that is in the next video. इस वीडियो में अभी I'm just gonna start the bike and you can just listen to it. अगर आप हेडफोन पहना है तो वॉल्यूम नीचे कर दो, because this is really loud.
that's it for this one. As I said, you know, it needs a carburetor, it needs some ignition, it needs a muffler. तो ये सब हम करेंगे और फिर देखेंगे, you know, then we gonna do a performance war with, you know, other bikes like the KTM 200, the 400 and all the other bikes. So that's it for this video. I'll see you in the next one.